Good evening to all of you. Sorry for slight delay. So we can start the discussion. If you have any query, please let me know. So Abhishek Kankaria ji ka question. Very good evening, Ashwin sir. If the person has foreign consultancy income only and not crossing rupees 20 lakh, then he will have to register compulsory in the GST. Abhishek ji, जैसा we all know that export of a service is basically interstate supply. And if we recall the notification number 10 by 2017, it's probably October 17 ka notification hai, which talks about that in case of interstate supply of the service, not required to take registration till it cross threshold limit. So if we read that notification along with section 7 of IGST Act, which talks about export of service is basically the interstate supply, and therefore we can say that if my export is up to rupees 20 lakh, I am not required to take registration because 20 lakh is a threshold limit. I hope it is clear. Next question, Aris Zika. Penalty imposed on my client in section 73. Whether in appeal to the joint commissioner, can we represent additional evidence? Yes, you can represent, definitely. Because it's first time you are making the appeal to the commissioner appeal under section 107. Definitely you can make or you can produce the document. There is, because it is first appellate authority, correct? Definitely you can, in my view. Very good evening to all of you. Ashwin Thakkar ji ka question hai, franchisee brand AC outlet restaurant, franchisee brand AC outlet restaurant can charge 5% GST on food item without ITC, or required to charge 18 with ITC. If resell of ice cream and mineral water, they are required to charge 18 on such goods. So the point is, if they are providing the restaurant services, they can definitely charge 5% without ITC. And because we know one circular has been clarified that ice cream is supply of the goods, therefore, and other mineral water, etc., wherever there is goods, they can charge the respective tax rate. जो भी वो गुड्स सप्लाई करेंगे उसके ऊपर वो रिस्पेक्टिव टैक्स रेट चार्ज करेंगे. आरिस जी का क्वेश्चन है, आई हैव डन सप्लाई टू द एसीजेड with payment of taxes but not claimed the refund. Okay, as collected tax from SEZ. Okay, also on invoice not mention supply to SEZ, so can penalty be levied? See, I can say you are not complying if you are not taking the refund, no problem, because you are doing correct thing. Unjust enrichment, we all know the concept of unjust enrichment in the GST. Because you have collected, so incidence of the tax has been passed on by you to the SEZ. You have not borne the incidence of the tax, and therefore you cannot take the refund. Otherwise, it will be unjust enrich. Point number one. Point number two, because you have not mentioned the fact that is required as per the rule 46. So it is non-compliance. However, whenever the penalty, up to wala penalty is being raised, is being imposed, then always section 126 to be considered by the officer. So मेरे यहाँ पे एक सिंपल मेरे अनुसार एक सिंपल प्रोसीजरल लैप्स हो गया. So it can be simply it can be 500 or something penalty can be levied, but not like 50,000 under section 125. If this is the case, you may give the reply by quoting section 126, etc. I have done supply to the, Satyanarayan ji. Recently, we are facing OTP delay in generating e-way bill. Any alternate or relaxation during this network problem period?
सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ उन्होंने स्टार्ट किया ना अभी, जैसे संदेश जो एक ऐप है, अल्टरनेटिव वे टू गेट द ओटीपी, संदेश एंड मोबाइल एंड समथिंग वन मोर they have started. But if it is not coming in that, I don't know what is the alternative way. Let me check and confirm. You are already the member of GST. I would request to post the query tomorrow in the WhatsApp group so that I can check and then get back to you. अनिल बाजपेयी जी, एक डीलर ने रेलवे से स्क्रैप खरीदा और आरसीएम के तहत आईजीएसटी जमा कराना था, पर सीजीएसटी और एसजीएसटी में अगस्त 22 में जमा कराया और रिटर्न फाइल कर दिया, पर अभी तक कोई अमेंडमेंट भी फाइल नहीं हुआ। क्या करना होगा? क्या सेक्शन 77 का लाभ मिल जाएगा? मेरे हिसाब से मिल जाएगा, बिकॉज आप उस ट्रांजेक्शन को इंट्रा मानते हुए C+S पे कर रहे हैं, बट आपको आई पे करना था, तो आप करेक्ट टैक्स पे कर दीजिए, कॉरेस्पॉन्डिंगली रिफंड ले लीजिए। बट अगर आपने उस C+S का आईटीसी लिया है तो आप रिफंड नहीं ले सकते, आपको वो रिवर्स करना पड़ेगा C+S, और आई आपको क्लेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्योंकि वी ऑल नो दैट आरसीएम के ट्रांजेक्शन पर डबल इम्पैक्ट होता है, करेक्ट, एक हमें टैक्स पे करना होता है, एक हमें आईटीसी लेनी होती है, तो टू दैट एक्सटेंट आप ले सकते हैं सेक्शन 77 का लाभ। बट अगेन आप रिफंड तभी अप्लाई करेंगे जब आपने उसका आईटीसी क्लेम नहीं किया है। Housing society is collecting sum of rupees 1 lakh each from its member for one time major repair, but its maintenance is below 7/5. The repair is major repair and one time in the nature. Okay, so society need to apply the GST. See, because we know the relaxation is up to 7,500 per person per member, correct? That is per month per member. So you are not required to collect the monthly, you are not required to collect the GST, but if it is one time or whether it is across over a period of the time, if it is more than 7,500, then you should collect the GST to avoid any litigation. If you are ready to go for the litigation, then no problem. Because if you have the fact in your favor. So, and also there is a concept of rule 33. If you are incurring the capacity in pure agent, okay, whatever the expenditure you incurred and you are collecting from the member, then again rule 33 says that it will not be added in the value. So that concept would also be considered into the mind while deciding whether GST need to be charged or not. Ashwinji, restaurant owner opt 5% without RTC, having commercial rental income to require 18% on rent income. So आप क्या कह रहे हैं? अश्विन ठक्कर जी कह रहे हैं, एक तो आपने कहा रेस्टोरेंट ओनर ऑप्ट फॉर 5% विदाउट आईटीसी हैविंग कॉमर्शियल रेंटल इनकम टू रिक्वायर्ड 18 और रेंट इनकम, ठीक है, एंड देन रेस्टोरेंट ऑप्ट 5% विदाउट आईटीसी कैन क्लेम सम कॉमन आईटीसी फॉर सेल ऑफ सम अदर गुड्स 18%. हाँ, मतलब सी, we all know that if 5% is without ITC, so it will be considered as exempt income, and you are making two supply. One is taxable, which is 18%, or rental income 18% goods wala, and one is exempted 5% without ITC. Then we can say that the concept of 17 subsection 3 rule 40 to 43 would apply and a proportionate calculation to be made. ठीक है, सर 17-18 GSTR 3B वर्सेस GSTR 2A का जो डिफरेंस है, अगर वो अमाउंट विदाउट इंटरेस्ट अभी जमा कर दिया जाए तो क्या, एक सेकेंड सर, GSTR 17-18 3B वर्सेस 2A का जो डिफरेंस, अगर वो अमाउंट विदाउट इंटरेस्ट अभी जमा कर दिया जाए तो क्या इंटरेस्ट का अमाउंट जमा किए बिना 17-18 का जो नोटिस है वो कैंसिल हो जाएगा? क्या नहीं होगा, इंटरेस्ट आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। क्या अगर आईजीएसटी जमा करा दें तो अब आईटीसी ले सकते हैं सर? ऊपर वाले क्वेश्चन से रिलेटेड सी, द प्रॉब्लम इज विद रेस्पेक्ट टू
आर आई 16(4) का एप्लीकेबिलिटी ऑन आरसीएम ट्रांजेक्शन। पॉइंट यह है कि क्या हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं ऑन आरसीएम ट्रांजेक्शन ऑन पेमेंट बेसिस इंस्टेड ऑफ टू द ईयर टू विच इट पर्टेन। सो हम जानते हैं 17-18 का या 18-19 अर्लियर सितंबर था, आफ्टर दैट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर नाउ इट इज 30th नवंबर। सो इन माय व्यू, जहां पर आपको जहां पर आपका सप्लाई रजिस्टर्ड नहीं है, जहां पे आपका सप्लाई रजिस्टर्ड नहीं है और उसने वो ट्रांजेक्शन जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट नहीं किया आरसीएम वाला, देन इन दैट केस यू नीड टू प्रिपेयर द सेल्फ इनवॉइस 31(3)(f) के कारण। तो जहां पर आप सेल्फ इनवॉइस बना रहे हो, तो आप उस टाइम पर आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, इवन इट इज बियॉन्ड 16(4). बट ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप आरसीएम की आईटीसी 16(4) के टाइम के बाद क्लेम कर रहे हो तो 101% है, डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट करेगा और आप अपील करनी पड़ेगी। और अपील भी कौन सी, ट्रिब्यूनल लेवल तक जाना पड़ेगा। विद बिफोर दैट आई डोंट फील कि दैट इट विल बी रिलैक्स्ड इन द कमिश्नर अपील और सम। दिस इज माय व्यू। ठीक है, आपने एक चीज और पूछी, और अगर जमा नहीं करवाते हैं तो क्या होगा। तो देखो, पहला बात है, आपके ऊपर क्या है, 73 या 74 अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि आपने टैक्स तो करे, टैक्स तो पे कर दिया। इट इज नॉट मालाफाइड इंटेंशन और समथिंग लाइक दैट, खाली टैक्स इनकरेक्ट पे किया है। तो अगर नोटिस आए तो आप उसका रिप्लाई करो। वी ऑल नो दैट इनिशियल ईयर्स मल्टीपल प्लेसेस दे हैव गिवन द रिलैक्सेशन। कि जैसे अगर मैं एक बात करूं आपके साथ, सर्कुलर 93 एंड सर्कुलर 119, दो ऐसे सर्कुलर थे जो आरसीएम पर C+S की जगह आई की डिमांड करते हैं। बट उन्होंने पहले क्या कहा उस सर्कुलर में, कहा एक पर्टिकुलर डेट के पहले अगर किसी ने टैक्स पे कर दिया C+S तो भी माना जाएगा, इट विल बी पेड। सो टेक द रेफरेंस ऑफ दैट सर्कुलर। सो आई वुड से not required to pay the taxes now at your own. Pay the taxes when it is being noticed by the officer. माइट भी ऐसा हो सकता है वो टाइम लिमिट एक्सपायर हो जाए, प्रॉबेबली ऐसा हो सकता है वो टाइम लिमिट 17-18 का एक्सपायर हो गया, 18-19 का अभी दिसंबर है, 19-20 का मार्च है, समथिंग लाइक दैट। सो देयर मे बी द पॉसिबिलिटी दैट वो टाइम लिमिट एक्सपायर हो गया। आपका ट्रांजेक्शन कौन सी ईयर का वो मुझे जरूर बताना एक बार। मनोज जी का क्वेश्चन रीड कर रहा हूं मैं। एक्सपोर्ट गुड्स बीआरसी 15 मंथ रियलाइज्ड नहीं हुआ तो आईजीएसटी रिफंड रिवर्स करना पड़ेगा क्या? आफ्टर 15 मंथ बीआरसी क्लोज हुआ है, सी बीआरसी रिसीव हुआ है, मतलब बैंक रियलाइजेशन, मतलब आप ये कहना चाहते हैं मनोज जी, यू हैव रिसीव्ड द रियलाइजेशन आफ्टर 15 मंथ, दे बेसिकली द आफ्टर द टाइम लिमिट ऑफ द फेमा, करेक्ट। तो अब इसमें क्या है, अब मैं अगर रूल 96B को रीड करता हूं, तो रूल 96B क्या कहता है कि अगर आपने रियलाइजेशन नहीं लिया है विद इन द टाइम लिमिट ऑफ द फेमा, देन यू हैव टू रिवर्स अलोंग विद इंटरेस्ट, एंड वापस आप अप्लाई कर सकते हैं जब आपको रिसीव हुआ विद इन 30 डेज। तो अगर ये नहीं किया तो प्रोबेबली इन द फ्यूचर डिपार्टमेंट, देखो अब आपका वो टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया, रिवर्स और रिक्लेम, पहले आप रिवर्स करोगे फिर वापस रिफंड अप्लाई करोगे, तो लेट देम इंटीमेट टू द डिपार्टमेंट। तो बेटर क्या है, लेट देम इंटीमेट, लेट यू इंटीमेट द डिपार्टमेंट अगर 30 दिन क्रॉस हो गया है तो, क्योंकि 30 दिन अगर क्रॉस हो गया ना तो वापस वो है ना रिफंड भी नहीं दे सकता, प्रोबेबली ही मे ऑब्जेक्ट ऑन द रिफंड। दैट इज माई व्यू। मनोज जी क्लियर है ना? अगर काउंटर क्वेश्चन तो प्लीज रेज कीजिएगा। Any declaration required to be submit to the department for opting 5% without right? नहीं, एज ऑफ नाउ कोई डिक्लेरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां पे अभी तक कोई डिक्लेरेशन बोला भी नहीं है लॉ में, तो मेरे हिसाब से रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ केएम सोनीगारा जी का। टर्नओवर इन 22-23 6 करोड़। Hence liable for e-invoicing, but my all sales is tax free whether any form is non applicable, नहीं whether any form for non applicable, see form तो नहीं है, there is no such form at all, but only point
Only point that e-invoicing is not applicable on in your case because it's entirely exempted. So the form, see, there is a declaration as per the rule 46. The one new concept has been added. If e-invoicing is not applicable, is exempted. Sorry. It is exempted. Exempted means if you recall the notification, respective main principle notification of e-invoicing, then it says that it is not applicable on banking sector, financial banking, NBFC, transportation of goods, passenger transportation services, goods transportation services, multiplex screen. So on those organization where e-invoicing is exempted, then they need to declare the statement on the invoice. But in your case, because you are providing exempted supply, so applicability of invoicing is not there. It is not that it is being relaxed. Applicable ही नहीं है. So in that case, there is no requirement to write on the invoicing. But still, if you like to, for safer side, if you like to go, then you may quote that sentence. To take the sentence, refer the rule 46. ठीक है. तो वो वाला जो sentence है ना, please copy on the invoicing. That's it. Whether in appeal should be any penalty and deposit 10% dispute or no need to pay penalty at the time of appeal. At the time of appeal, see, 10% would always be of the tax disputed. You have correctly written that 10% would be of tax disputed. So if there is a dispute with respect to interest, if there is a dispute with respect to penalty, we are not required to pay any component of interest or penalty. We need to deposit only the 10% of the taxes. Is it clear? आप अगर सी मोहम्मद जी का क्वेश्चन रीड कर रहा हूं मैं, मोहम्मद भाटी, how much penalty will be imposed if our supplier is found fake by the department and entire tax would be reversed along with interest and penalty? Probably the penalty would be under section 74, so which would be maximized till 100%. So there is a slab rate. If you read the section 74, 15%, 25%, 50%, or 100%. Then in that case, it could maximum could be equal to the amount of the ITC which you have taken. अनिल जी, अगर अगस्त 22 का है तो बेटर है अभी भी. सो अगस्त 22, ओके, तो टाइम निकल चुका है. आई होप यू हैव फर्निश्ड द GSTR 3B. सो अगर आपने फर्निश कर दिया है तो आप वेट कीजिए डिपार्टमेंट के नोटिस का, बिकॉज इफ यू विल डिपॉजिट एंड पे नाउ, then probably the question would be on ITC of IGST. So just wait, not to deposit. We have hotel in Madhya Pradesh. Room tariff is less than 7,500. Perfect. We are charging food 5% and rent 12%. Now my question is, we start providing safari services. Is we started providing safari services also? So would be the GST rate मैं नहीं बता सकता सविता जी. I would not be able to recall the entire GST tax rate structure. तो आपको वो देखना पड़ेगा. मुझे टैरिफ याद नहीं है, तो टैरिफ आपको एक बार देखना पड़ेगा. एंड प्रोबेबली इफ यू आर द मेंबर ऑफ द GST एडुकेटिंग, तो आप ये क्वेश्चन पोस्ट कर दीजिए ग्रुप में. माय टीम वुड सर्च एंड गिव द आंसर along with the relevant extract. ठीक है. So Jayarada Govind ji, I have the residential building. Okay. A builder or contractor will demolish the same and will build 3 floors with the material. In consideration, will take the first floor. What would be the GST compliances for me? So promote, अगर आप उसको अपने use करते हैं, see, now we all know that from 1st April 2019, the real estate sector, एक तो है क्या एक तो one point is that the reverse, I can say the RCM applicability is being shifted on the promoter developer. Meaning thereby, so like if you are taking on any amount, any consideration, so the GST need to be paid under RCM for that consideration, joint development agreement, or if it is a long-term lease. Now, if you sell that flat, then the question of GST would arise if you are selling that flat under before completion certificate. Otherwise, it is not applicable. And
no other liability on you. You are the you are the owner, right? So you are not required to pay anything. Only when if you sell that flat before consideration, so before completion certificate, then you need to pay the GST on to third party. ओम प्रकाश जी, जॉब वर्क का इनपुट क्लेम के लिए जीएसटी रिटर्न जॉब वर्क का फाइल करना जरूरी है क्या? सी, देयर इज नो लिंकिंग दैट ITC 04 अगर फाइल नहीं किया तो मुझे ITC नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं प्रिंसिपल हूं, लेट्स से आई हैव सेंड द गुड्स एंड आई हैव रिसीव्ड द गुड्स बैक एंड ही हैज रेज्ड द टैक्स इनवॉइस फॉर जॉब वर्क चार्जेस, तो मैं उसका ITC क्लेम कर सकता हूं। ITC क्लेम करने के लिए 16(2) की कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, रीड विद रिलेवेंट रूल 36। तो कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि जॉब वर्क के केस में ITC 4 नेसेसरी है, सो देयर इज नो कंपल्सन। हाँ, ITC 4 फाइल नहीं किया, देयर कुड बी एनी पेनल्टी, एनी अदर पेनल्टी फॉर नॉन फाइलिंग, बट ITC ब्लॉक नहीं कर सकता। Ashwin Thakkar can restaurant claim the ITC for sale of ice cream and mineral water if restaurant of 5% on food item and also some other common ITC too? नहीं, सेल ऑफ आइसक्रीम पर रिस्पेक्टिव टैक्स रेट लगाएगा और गुड्स वाली और मिनरल वाटर के ऊपर अप्रोप्रिएट टैक्स रेट लगाएगा, तो उस टू दैट एक्सटेंट दे कैन क्लेम द ITC। सी, 5% विदाउट ITC हो गया मेरा। अगर मैं विद सी कौन सी रेट अप्लाई कर रहे हो, वी ऑल नो दैट मैं रेट के ऊपर आपको ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकता। जस्ट जो मैंने आपको लिमिटेशन बताई थी कि मुझे टैरिफ ध्यान नहीं है हर किसी आइटम का क्या रेट है। ओनली पॉइंट, अगर मैं लॉ वाइज पॉइंट की बात करूं, तो मैं अगर ये गुड्स की जो सप्लाई करता हूँ, ठीक है, आइसक्रीम या मिनरल वाटर, ये रेट अगर विद ITC का है या विदाउट ITC का है, अगर विदाउट ITC है तो बिल्कुल करेक्ट है, मैं नहीं ले सकता, क्योंकि रेस्टोरेंट जो फूड आइटम है वो भी मैं विदाउट ITC वाली रेट ऑप्ट कर रहा हूँ और जो गुड्स है वो भी मैं विदाउट ITC वाली रेट ऑप्ट कर रहा हूँ। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि यहाँ पर दो तरह की रेट अप्लाई होती है, 5% विदाउट ITC, लेट्स से आइसक्रीम के ऊपर मैं विद ITC वाली रेट अप्लाई करता हूँ। इन दैट केस आई कैन डेफिनेटली टेक द ITC। पहला वो ITC जो 1-to-1 कोरिलेट करता है दीज टैक्सेबल आइटम, एंड सेकंड जो कोरिलेट करता है कॉमन से, तो वो प्रोपोर्शनेट फंडा अप्लाई हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो एक मिनट लेना चाहूंगा मैं। As you all know that we are providing the GST membership and PF membership regarding to the tax consultant to handle the day-to-day GST queries and day-to-day PF and ESIC related queries. And in the GST, we are providing the three type of the membership. One is silver, one is gold, and one is platinum. Basic is silver, in which we are resolving the query, then gold, resolving the query, plus 5, handling the 5 notices. We are supporting in reviewing the 5 notices. So, and that platinum is the highest one, in which we are solving the query, 5 notices, plus also education. So you can watch my batch, entire batch for 65 hours without any additional payment, without any, and for entire year you can watch unlimited time. And when you renew, you can attend my live batch, one batch in the entire year. कोई भी आप अपना batch choose कर सकते हैं. So in this case, the charges are the 5,000, 10,000, 15,000, and the discount rate is 10%. You can visit our website www.educating.com and you can purchase if you are interested. And I can assure you one thing, that we are very, very working hard toward the replying the GST queries and supporting in the notices. And you won't find any problem. If you find any problem, I'm here to tackle the question, to tackle the point, to tackle the dissatisfaction level. That I can assure you. So coming back to the discussion. RCM applicable on residence building, rent, or commercial residence? See, a residential building which is used for business, which is used for in the course or furtherance of business. Correct now. Can capital goods ITC take and utilize 5 years, or can utilize in any time? Anytime. Mr. Kanti, there is no problem. See, the time limit is to take the ITC. Once you've taken, then it can be carried forward unlimited time. Huh. In case of the capital goods, the 5 year would come if you supply
or if you further sell that capital goods prior to 5 year. तो जो 5 साल का फंडा है ना, उसमें the 5 year concept in the capital goods is basically not to take the ITC, not to complete utilize the ITC. This is 5 year would apply on reversal part. If you supply the capital goods prior to 5 year, then section 18(6) would apply, that you need to pay the GST by comparing the two value, tax on the transaction and the proportionate ITC, considering like 5 year or 5% per quarter. Very good evening. Manoj ji, export with the payment. IGST रिफंड आईएस गेट से ऑटोमेटिकली आता है। डॉक्यूमेंट में अप्लाई नहीं करना तो बीआरसी का लेट हुआ तो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा क्या? नाउ सी, द फर्स्ट असेसमेंट इज ऑलवेज सेल्फ असेसमेंट. इट मींस, सी, if you recall the rule 96 sub rule 10, what happened? That in certain transaction or in certain cases you cannot export on IGST. But what happened in initial days 17-18 के टाइम पे क्या हुआ था, 18-19 के टाइम पे क्या हुआ था? The person has made the export on IGST, ऑटोमेटिकली रिफंड आ गया. बट रूल 9610 मना करता है कि आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते ऑन IGST. इन दैट केस कैसे मालूम चला डिपार्टमेंट को? ऑब्वियसली इट विल बी ड्यूरिंग द डिपार्टमेंटल ऑडिट और स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स. सिमिलर पैटर्न पे मनोज जी, rule 96 is creating the responsibility or onus on the recipient, on the registered person itself, that if you not receive the amount within the time limit of EMA, then whatever the refund you have taken, you have to pay back along with interest. So basically it is non-compliance, no doubt about that. Then if it is non-compliance, then how it will be the identified by the department? Only scrutiny or departmental audit. It cannot be identified by the portal. very good evening दत्ता जी. मनोज जी, एक्सपोर्ट, हाँ मैंने क्लियर कर दिया. दत्ता जी, sir, we have not reversed the ITC of 180 days wala and the amount is paid after 1. What to do, sir? If it is identified by the department, then you may reverse the ITC. You may require to reverse the ITC along with interest and pay the tax again. Or sometime they will only demand the interest portion till the time of payment. So wait कीजिए. अगेन सेम आंसर है मेरा. पहला क्वेश्चन है कि 180 डेज के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा. तो पॉइंट नंबर 1. सो इन माय व्यू अगेन द सेक्शन 50 वुड बी अप्लाइड. अगर मैंने ITC अवेल किया और यूटिलाइज किया तो मुझे इंटरेस्ट का एप्लीकेबिलिटी आएगा, अदरवाइज कभी नहीं आएगा. बट 16(2) का प्रोवाइजो कहता है जैसे वो 180 डेज क्रॉस हुआ, इट विल कम, मतलब वो आपका अप्लाई हो जाएगा फॉर एंटायर 180 डेज. ठीक है ना? डेट ऑफ इनवॉइस से आपका काउंट होगा जब आपने ITC क्लेम किया. तो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है, तो मैं ये कहूंगा कि आप वेट कर लीजिए, लेट द डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई द सेम एंड देन do the payment of interest only, not anything else. So if the department is saying you need to reverse and pay the cash, so that you can handle through reply. Last question Savita ji ka hai. ITC swing in our GSTR to be, but the invoice is not received, or sometime ITC is not related, that we have to थोड़ा सा आपको एक सेकंड. Sorry, अब मैं रीड कर रहा हूँ. बट द इनवॉइस हैज नॉट बीन रिसीव्ड और समटाइम ITC नॉट रिलेटेड टू व्हाट वी हैव टू, कैन वी टेक एंड सेम रिवर्स इन अदर वाला कॉलम? अदर में मत कीजिए, परमानेंट में. सी, पहला वाला केस तो क्लियरली परमानेंट वाला, इनवॉइस नॉट रिसीव्ड. ठीक है, पहला वाला केस तो क्लियरली 4B2 का है. सिर्फ डाउट है अनदर वन में कि वो आपसे बिलोंग नहीं करता. प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर आप अभी लेकर रिवर्स कर देंगे, लेट्स से यू हैव टेकन एंड रिवर्स द सेम, then problem would come. Suppose next month में उसने
अमेंडमेंट कर दिया उस सप्लायर ने, या लेट से क्रेडिट नोट इशू कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, जो आपका 4A5 है, तो वहां पर ऑटो पॉपुलेशन कम अमाउंट का होगा। मतलब जिस आईटीसी के लिए आप एलिजिबल है, जिस आईटीसी के लिए आप एलिजिबल है, वो भी रिड्यूस कर देगा। तो इन दैट केस, पर्टिकुलर इस केस में मेरा ये मानना है कि आप है ना आईटीसी को रिड्यूस कर दो 4A5 में। वाई आई एम सेइंग सो, तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि फ्यूचर में कभी आपका वो कम अपीयर होता है बिकॉज ऑफ क्रेडिट नोट बाय द दैट सप्लायर विच डज नॉट द ट्रांजेक्शन विच डज नॉट बिलोंग्स टू यू, और लेट से ही इज डूइंग द अमेंडमेंट बाय विच 4A5 इज बीइंग रिड्यूस्ड, तो वहां पे आप इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि वो आपकी एक्चुअल आईटीसी को कम कर, आप इंक्रीज कर दो। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है तो यू कैन जस्ट मैच बोथ द फिगर। 4A5 एक बार कम लिया, एक बार ज्यादा लिया, इन टोटलिटी देयर विल बी नो डिफरेंस। सो दिस इज माय व्यू, आई होप इट इज क्लियर। अगर आपकी जीएसटी ऑडिट की बुक 996 की डिटेल डिस्कशन भी है क्या, मैं ऑडिट की बुक में नहीं है 996 का डिटेल डिस्कशन, लेकिन अगर आप ऑडिट का बुक परचेस करोगे तो आपको रिकॉर्डिंग फ्री में मिलेगी। जीएसटीआर 996 की जो रिकॉर्ड, जो भी मेरी किताब, जो हम एडुकेटिंग, नॉट मेरी, कि जब भी कोई बुक आती है ना एडुकेटिंग, जिसमें कुछ कोर्स फ्री रहता है, एवरी बुक यू परचेज देयर वुड बी सम कोर्स ऑफ एडुकेटिंग। तो आप अगर कोई कोर्स मतलब वो बुक लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगी। दैट इज माय पॉइंट, आई होप इट इज क्लियर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर attendance. If you like the discussion, please click on the like button and also click on the subscribe button, and requesting to share to the maximum people you can. And if you like to become faculty on our platform, on educating platform, suppose you know the accounting, you know the let's say income tax, or you know the GST, or you know the um, any subject like FEMA, FERA, and you have the command and already have the experience. See, pre-mandatory requirement is that you must have the experience of teaching. And if you like to bring the course on our on educating platform, then you can definitely visit our website and contact the uh, contact my team. The two number are being given in the website www.educating.com. So from my side, the today webinar is today live discussion is completed. And if you have any question, any query, you can let me know. Otherwise, we can conclude. So this is the contact number for which, if you like to become the faculty on our educating platform, or if you uh, like to purchase any membership or any course or any books, anything, you can visit our website and do the same. अश्विन जी का क्वेश्चन है, द सप्लायर फाइल अक्टूबर 1 लेट, दैट इज 14th नवंबर, कैन वी क्लेम? नहीं, नहीं क्लेम कर सकते। रिवर्सल का क्वेश्चन तभी आएगा जब आईटीसी आपकी 2B में आ रही है। अगर आईटीसी 2B में नहीं आ रही तो 16 टू AA सेटिस्फाइड नहीं होता, यू कांट क्लेम एट ऑल। तो जो अक्टूबर का GSTR1 है, जिसमें कोई 20 to 23 का ट्रांजेक्शन रिपोर्ट करना है, तो इट हैज टू बी रिपोर्टेड विद इन टाइम। शरद जी, पेमेंट मेड to the supplier after 1 interest payable after which date? See, the day when it is being utilized, that ITC being utilized, then only. See, ITC के ऊपर इंटरेस्ट, आईटीसी के रिवर्सल के ऊपर इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा 50 सबसेक्शन 3 के कारण, और 50 सबसेक्शन 3 अवेल्ड एंड यूटिलाइज की बात करता है। So it means the day when you have utilized the same toward the payment of the tax liability, then only from that date till the date of reversal, the question may come on the interest. So thank you very much. Goodbye to all of you. And let me take one more question. Section 73, penalty attract if only interest component paid after the due date of the DRC. Sir, 73 का penalty attract if only interest component paid after due date of the DRC 01. क्वेश्चन नहीं समझा सुनने से। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस क्वेश्चन को आप पोस्ट कर देना इस वीडियो पर, एंड देन वी कैन हैव द डिस्कशन लेटर ऑन आल्सो, एंड आई विल पोस्ट माय कमेंट। इफ आई हैव रॉन्गफुली एंटर्ड परमानेंट आईटीसी रिवर्सल, देन वो दिक्कत है, तो केयरफुली करो, क्योंकि परमानेंटली रिवर्स को रिक्लेम नहीं कर सकते। अभी भी आपके पास टाइम है टिल 30th नवंबर। अगर ऐसा कोई काम आपसे हो गया है तो प्लीज रिपोर्ट एज ओपनिंग बैलेंस। अगर कोई ऐसा काम हो गया कि कोई आपसे परमानेंट रिवर्सल में डल गया, या कोई भी रिक्लेम बाकी है विच यू कैन रिक्लेम, तो प्लीज रिपोर्ट इन द ओपनिंग बैलेंस एंड डू द कॉरेस्पॉन्डिंग
treatment in the next GSTR 3B. आई होप अनिरुद्ध जी क्लियर है ना पॉइंट। मतलब उतना ओपनिंग बैलेंस आप उसमें जो रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट है वहां पे डाल दीजिए। एंड देन और एक मेरा एक सजेशन और है कि जो रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट है ना, सभी में आप एक एक रुपया डाल के छोड़ दीजिए। 30 नवंबर तक आप है ना एक बार डाल सकते हैं, बाद में एडिटिंग कर सकते हैं, करेक्ट। तो टिल 30th नवंबर यू शुड रिपोर्ट ₹1 इन ईच क्लाइंट। तो क्या होगा, यू हैव द ऑप्शन टू एडिट टिल 31st December. See, we all know that last day to report the opening balance is 30th November, but editing revise करने का ऑप्शन क्या, 31st December. तो you will have that one extra month to make the adjustment in that. I hope it is clear. So अब आज का डिस्कशन हम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।